As you all know, there is a seminar series, and today is 46th seminar of the series. The topic of the seminar is Developing Study Habits Amongst University Students. It will be delivered by Dr. Tehseen, who is working as a lecturer in Education Department. Now over to Dr. Tehseen Hassan. Assalamualaikum, dear colleagues, dear deans, directors, chairmen, faculty members, and dear students. I welcome you all in this seminar. Before going in detail, I want to share the need and importance of this specific topic. Let me start my presentation first. Our today's topic is development of study habits among university students. When we talk about quality learning, it is the byproduct of scholars' ability, study habits, and learning environment. Today, our concern is developing study habits. In this perspective, when we talk about the learning, it can occur anywhere. But as far as quality learning is concerned, it is sought through students' commitment. If a student is committed towards his or her studies, then quality learning can take place. There are a number of researches which shows that academic performance of students can be improved by sensitizing teachers regarding the importance of good study habits. So in this perspective, there is a need to train students to develop healthy study habits. If teachers are well trained, they can inculcate study habits in their students, and their study habits can be improved by changing things that are not related to their study material. Like we can guide them as to manage their time. We can enhance their student motivation, and we can guide them to avoid procrastination. In our perspective, it is observed that we all teachers teach their students together in a class, but the results of the class is very different. All the students cannot earn same grades. Here, either the students' ability or students' study habits are different. We cannot change students' ability. It is they inherited, but through effective study habits, we can improve their academic achievement. Learners who do not have enough information about the study habits do not attain effective study habits. Scholars' ability paves the baseline, and strong study habits build up the bridge, leading to high academic performance. But in our modern lifestyle, we observe that study habits are neglected. Students spend more time on their recreational activities, they spend more time on computers, they play games, they watch videos, and in fact, their on-screen tasks are increasing day by day. In this scenario, students must understand their preferred study habits to improve their academic achievement. Especially when we talk about university students, they are in the position that no one can force them to study. Actually, no one can make them to learn except themselves. They are the only person who, if they are motivated, they can learn. This thing results in poor learning. In order to reverse this growing decline of poor learning among the university students, here the role of teacher is to direct the students' behavior to channelize their study habits. These study habits grow in a gradual manner, reaching the level of internalization. We can say that study habits used to work in 3 dimensions. These are the 3 dimensions which are suggested by the John Covey: knowledge, skills, and desires. Skills and desires, these are the 3 dimensions
These three things makes habits. A teacher can give knowledge to the students. With the guidance, student skills can be improved, and teacher can motivate the students and inculcate the desire for learning. If they continuously practice these skills, this forms their good or effective study habits. When we talk about the study habits, we often think that these habits cannot be changed. But basically, habits are the practices which we use unconsciously, but it can be built by putting deliberate effort. If we practice our skills again and again, then it becomes automatic. It became the part of our nature. That is called our habit. These are some study habits which were identified in our research, which I have conducted in 2018. These are some factors which made up study habits. First one is the pattern of the study. What is pattern of study? Pattern of the study is the ways students are studying, like study silently, while studying, studying aloud, studying in a group, and then studying while listening to music. These are some patterns which university students observed while studying. And there are certain environments in which students like to study. These study environments are like studying in a room, bedroom, you can say, studying in a study room, studying in TV lounge. Some people, some students used to use cafeteria for study purpose, and other use library for studying. And the third one is devotion of the devotion of the time for studying. It is not about the managing of time. Actually, it is related to how students spend time, devote time for studies. If he devote quality time for his or her studying, then effective learning took place. And fourthly, capacity to learn and concentration. Their level of concentration, the more concentration level, the more learning take place. आप ये कह सकते हैं कि जब स्टूडेंट की कंसंट्रेशन या लॉन्गर पीरियड के लिए हो तो उनकी जो लर्निंग है वो ज्यादा होती है. अमूमन देखा गया है कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं इट ऑल अबाउट, अगर वो 1 आवर से एक्सीड करते हैं, इवन के 45 मिनट्स के बाद भी जो स्टूडेंट्स की अटेंशन है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है. तो अगर स्टूडेंट्स में कैपेसिटी हो, अगर वो आप कह लें वेल ओरिएंटेड हों, देन दे कैन लर्न मोर. And next one is commitment to learning. How much student is committed towards learning? कि जो student है उसकी commitment towards learning क्या है, whether he is willing or not. And sixth one is self-directed study habit. And self-motivation. ये मेरी आवाज इको होके वापस. Next one is self-directed study behavior. It includes self-motivation,
जी सॉरी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जी, the next one is self-directed study behavior. Self-motivation is leads towards self-directed learning. If the students are internally motivated for learning, they can learn more. Nobody can force them to motivate internally. The next one is organization of the study plan. Make a plan for studying. It should be organized, not scattered. Which things need to be done on priority? This is also a part of study habit. And the last one is patterns of note taking, note preparation. How our students take notes. Sometimes students jot on each and every information which is going on in the classroom. And in this scenario, some specific or important information is neglected. Or and this type of notes are not very useful for the students. And when they want to prepare some lecture, so they face difficulty in this. Nazar? Mute हो आप कर सकते हैं। Okay, here is a study. Sorry, there is the internet problem. A study was conducted on study habits of university students, in which patterns of students were checked in high, average, and low achievers.
there is no big difference in the patterns of study habits in the high, average, and low achievers, which means that all of the students are using same patterns of studying. Same is the case with the environment of the study in high, average, and low achievers at university level. All types of environments are used in these three groups, but mostly used is study room or the bedroom. It is common in all three categories, high, average, and low achievers. There are some other factors, other elements of study habits like commitment to learning, concentration, organization of study plan, self-directed study behavior. In these two, there are these elements of study habits. Commitment to learning, concentration, organization of study plan, self-directed study habits. There is a difference between these two groups, high and low achievers. Which means there is a difference in their commitment level, their concentration level, their organization of study plan, and their also self-directed behavior is different. Here are some factors which are in fact positively affecting study habits of the university student. This data was taken from the high achievers. They identified these factors like financial factors, institutional factors, teacher support, psychological and personal characteristics, and home factors. These are some factors which are positively affecting their study habits. According to them, ये जो सारे factors हैं, these 5 factors formulate their effective study habits. They motivate them to stick to their studies. Like financial factors, they say financial support and high expenses of the university encourage them to study hard. Same is the institution factors like basic library facility, access to material, orientation regarding exploring material. Means they say that these facilities are available at in their institutions. This data was collected from the different universities. This says that these facilities are available over there that are not available in their homes. So they get benefit from these institutional support. And the third one is teacher support. They said that teacher encouragement, their feedback, their concept clarification, their continuous evaluation, even their biasness encouraged us to support, to study hard, to focus on our studies. And the other psychological and personal characteristics are they are self-motivated and goal-oriented. They want to achieve some goal. They, to some extent, they want to earn their degrees. They want to learn something. They are internally motivated. That's why they study hard. That's why they study hard, and their study habits are effective. And the other is home factor. Their parents' expectations. उनकी जो parents की expectations थी, they are also a source of motivation for them. So they stick to their study habits.
That's why they become high grades. They achieve high grades. Here are some recommendations based on my research. The universities have to provide institutionalized students mentoring services to develop the study habits of the students, which covers their motivational, educational, tutorial, techniques of note-taking, counseling, issues related to body of students community. That will, they need institutional support. And the other one is silent study and peer group learning may be promoted through teacher-directed thoughts and interventions. In my study, mostly silent study and peer group study are preferred pattern of study. In this way, if these, this is also common in average and low group. But if silent study and peer group study is directed through teachers, they give feedback to the student how to study silently, what are the techniques to study silently, and how they can get benefit from peer group learning. Then it will be very fruitful. It will be fruitful outcomes. And the next one is study habits of low achievers may be improved by commitment towards learning, self-directed studying behavior, concentration, and organized. At the end, I have given some tips how commitment of learning, how self-directed behavior of the student, concentration, and organized study plan can be improved in low achievers. And the last one is student having strong study habits may be identified early in the semester. And their potential may be used to benefit other students, those who are low in academics, those who are have to some extent you can say poor study habits or ineffective study habits. Here are some habits of highly effective students. The first one is do not attempt to cram all the studying in one session. Those students who are who have highly effective study habits, those who are good in their academics, they do not attempt to cram all the study in one session. Because if they plan things in one session, then their attention will be distracted. आप ये कह लें कि अगर वो 1 घंटे के लिए कंटिन्यूसली पढ़ेंगे या 2 घंटों के लिए कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो उनकी अटेंशन डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगी. Then successful students space out their work over shorter periods of time. It helps them to focus and revise the task. जब वो shorter period of time after getting having their breaks उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे दोबारा से, तो देन उनका जो माइंड है वो भी फ्रेश होगा, उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी ज्यादा होगा. So to be successful, we need to have regular yet shorter study periods. The second one is plan when you're going to study. Successful students schedule specific time throughout the week when they are going to study, and then they should stick to their schedule. जो सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक टाइम स्पेसिफाई कर लेते हैं. एंड द थर्ड वन इज स्टडी एट द सेम टाइम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट डेली स्टडी रूटीन. जब आप एक कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन बना लेंगे तो आपकी जो आप कह लें कि जो गैप आएगा, गैप नहीं आएगा आपकी स्टडीज में, और आपकी जो रेगुलर स्टडीज हैं दैट विल बिकम योर हैबिट. When you study at the same time each day, each week, your study will become a regular part of your life. आपकी daily routine बन जाएगी, and you will be mentally and emotionally more prepared for each session, and each study session will become more productive. जो भी आपका session होगा वो काफी productive आपके लिए होगा. आप daily की basis पे आप कहेंगे कि यहाँ तक हमने जो है ना वो हमारा goal है वो achieve कर लिया, तो next हम लोग हमारा next जो session है उसके लिए क्या target है. Then each study time should have a specific goal. You need to know exactly what you need to accomplish during each session.
अगर आप जो भी स्टडी टाइम या जो भी आपने फिक्स किया है उसके लिए जो सम टारगेट्स आपके होंगे, आप हर जो है ना सेशन के लिए कुछ गोल्स जो है ना वो फॉर्मुलेट करें कि जिससे जिसको आपने उस सेशन में अचीव करना हो. Like before starting studying, set a session goal, then sports your overall academic goal. Like अगर आप एक सेशन का करते हैं तो मीन्स आप ये कहें कि इस स्पेसिफिक सेशन में या 1 आवर के लिए मैं इस चीज को स्टडी करूंगा, और इस का मकसद क्या है, लाइक वोकैबुलरी बिल्डिंग है, अपनी कॉम्पिटेंसीज किसी स्पेसिफिक जो कोर्स है उसमें इन्हेंस करना. अगर वो कोई कोर्स आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसमें ज्यादा आप कह लें कि अवेयरनेस उससे रिलेटेड क्रिएट करना. The next one is never procrastinate your planned study session. कि जब भी जो भी आप सेशन जो है ना वो प्लान करते हैं उसको डिले ना करें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें. इट्स वेरी इजी. हम यूजुअली कहते हैं कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो है ना लैक ऑफ इंटरेस्ट है या समथिंग या सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट, या कोई ऐसी असाइनमेंट है दैट इज डिफिकल्ट, यू नीड समवन्स हेल्प. तो हम उसको जो है ना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उसको डिले करते रहते हैं, उसकी आप कह लें कि अल्टरनेट ढूंढते रहते हैं. तो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. सक्सेसफुल स्टूडेंट डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट स्टडीइंग, एंड दिस मेक इट दे मेक इट प्रायोरिटी. वो उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं कि अगर ये दिस टास्क इज डिफिकल्ट, वी हैव टू डू दिस. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट. जिसमें आप ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हो, जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी ज्यादा ना हो, ट्राई टू फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट फर्स्ट, बिकॉज डिफिकल्ट सब्जेक्ट रिक्वायर द मोस्ट एफर्ट एंड मोस्ट मेंटल एनर्जी. Then you should start first. Once you have completed the most difficult task, it will be much easier to complete the rest of your work. The seventh one, always review notes before starting an assignment. कोई भी assignment जो है ना आप करने से पहले review your notes. This will help you to understand और आप कह लें कि to guide your next session. Before the start of any session, before the start of any assignment, review your notes thoroughly. Reviewing your notes before each session will help you to remember important subject matters which you have learned. Next is make sure you are not distracted while you are studying. Everyone get distracted by something. Maybe it's TV, or maybe it's your family member, and it may be sometimes quiet place also distracted you. कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है और आपको आगे पीछे से जो आवाजें आ रही होती हैं आपकी सारी अटेंशन उसकी तरफ हो जाती है. और समटाइम्स आप कह लें कि सम पीपल एक्चुअली स्टडी बेटर इन लिटिल बैकग्राउंड नॉइज. जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग स्टूडेंट्स स्टडी व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, वो म्यूजिक सुन रहे होते हैं बट उनकी जो कंसंट्रेशन है वो उनकी स्टडीज की तरफ होती है, उनका ध्यान उस म्यूजिक की तरफ नहीं होता. वो जो म्यूजिक है वो उनको हेल्प आउट करता है, जो आपकी इन्वायरमेंट में बाकी डिस्ट्रैक्टर्स मौजूद होते हैं उससे अवॉइड करने के लिए. बट दिस इज नॉट आप कह लें कि दिस इज नॉट फंक्शनल फॉर एवरीवन. सब क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको सही कॉम प्लेस चाहिए होती है साइलेंट स्टडीज करने के लिए. ठीक है, तो देन बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग, फाइंड अ प्लेस वेयर यू फील कंफर्टेबल. Use study groups effectively. This is a phrase, two heads are better than one. Well, this can be especially true when it comes to studying. Working in a group enables you to get help from others when you are struggling to understand a concept. जब कोई concept आपको जो है ना समझ नहीं आ रहा, तो you can get help from a group. और secondly, when you try to complete assignment quickly, or some assignment is difficult, or some assignment is lengthy, you can get help from the group, from your peers. However, study groups can become very ineffective if they are not structured
or if group members are not serious, or if group members are not prepared, then study groups are not effective. जैसे कि मेरी स्टडी में अगर आप देखें तो ग्रुप स्टडीज हाई एवरेज और लो अचीवर्स सारे करते हैं, लेकिन जो हाई अचीवर्स हैं उनका रिजल्ट वो डिफरेंट है, और जो लो अचीवर्स हैं इनकी एवरेज अचीवर है, सबका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। तो बेसिकली ये है कि ग्रुप स्टडीज को इफेक्टिवली यूज किया जाए, उसके भी कुछ गोल्स रखे जाए, कुछ टारगेट्स रखे जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाए, then it is effective. And the last one is keep track of deadlines and important dates. कि जो आपकी important dates हैं, जो deadlines हैं, उसका track रखा जाए कि which assignment is important, and same is the case कि deadlines, किसकी deadline पहले और किसकी deadline बाद है। इसी तरह इन चीजों को prioritize किया जाए कि किसको पहले करना है और किसको बाद में करना है। Here are some strategies and tips for teaching students study habits and skills. Good study habits and techniques are critical to help students learn more efficiently, feel more academically confident, face challenges, and ultimately do their best. For this purpose, we can say many learners might not actually know how to study for tests. उन्हें पता नहीं होता कि वो टेस्ट के लिए वो कैसे प्रिपरेशन करें, how to keep their notes organized. These skills can be improved over time by practicing it. If you notice some of your students are struggling with basic study skills and habits, make time for to address and teach them. At first level, build relationship with the students. Here are some techniques. There are some ways to build a strong relationship with the students. First one is to talk them about non-school related subject. Means के जो उनकी academic से related जो areas हैं उन पे discussion करें, कि जो events हो रहे हैं उससे related discussion करें. This will help in relationship building. Second, let them teach you about their interest. हर इंडिविजुअल के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, और एज अ ह्यूमन नेचर हम देखें तो हर इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को बताना चाहता है कि दिस इज माय इंटरेस्ट. दिस विल नॉट स्टॉप योर लर्निंग. अगर आप उनके इंटरेस्ट को सुनेंगे, दिस विल ऐड टू योर लर्निंग. आपकी जो अपनी जो लर्निंग है, एक तो वो इनहांस होगी, और सेकेंडली स्टूडेंट्स के साथ रैपो बिल्डिंग, उन्हें ये पता चलेगा कि आप उनको लिसन करते हो, आप उनको सुनते हो, आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हो, तो उनका आप पे जो ट्रस्ट है वो ज्यादा बिल्ड हो. थर्ड वन इज रिमेंबर थिंग्स अबाउट देयर लाइव्स. अगर जो स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के, उसके बारे में याद, हम अगर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें तो हमें अमूमन याद रहता है कि फलां बच्चे से रिलेटेड फलां बच्चे ने ये बात कही थी जो दैट इज मच अट्रैक्टिव फॉर यू. उसको रिमेंबर कि उसको याद रखें, और ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग द एक्टिविटीज और डिस्कशन उसके उनके साथ इंटरेक्ट करें, उन्हें बताएं कि आपको उनकी ये बात याद है. Talk about students' family, talk about their interest. These small gestures reminds the student that you really know and care about them. And next one is share about your own life. This is one of the strongest way to build connection between you and students. Share about your activities you do outside the university. अब ऐसी activities, it can be educational, it can be on personal basis, जिससे उनको कुछ lesson learn हो, कुछ moral stories आपके करके based on your experience उनके साथ share करें. This will help you to build a relationship with the students. It is very important to keep boundaries. It doesn't mean you share each and everything. In limits you can share. It is said, आप इस चीज को ज़हन में रखें. Our teacher should be friendly, not friend of the students. ठीक है, टीचर को हमेशा जो है ना स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होना चाहिए. He or she should not be the friend of the student. Also engage students in the activities with them. जो आपकी activities हैं
उनमें स्टूडेंट्स को एंगेज करें, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उनसे आप कह लें कि हेल्प लें, तो देन दे फील मोर कॉन्फिडेंट। शेयर इंस्पिरेशनल स्टोरीज फ्रॉम योर लाइफ, अपनी लाइफ की जो इंस्पिरेशनल स्टोरी जहाँ पे आपने जो हार्ड वर्क किया है उनको शेयर करें। जो एलिमेंट्स जो आप समझते हैं कि आपकी लाइफ के बहुत इफेक्टिव हैं उनको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। इससे उनको ये रियलाइज होगा कि यू आर आल्सो अ ह्यूमन, और आपने भी कुछ गोल्स सेट किए थे जो कि आपने अचीव किए तो आप इस पोजीशन पर पहुंचे। यूज देयर इंटरेस्ट इन योर लेसन एंड एक्टिविटीज। दिस थिंग नीड्स योर प्लानिंग। आप पहले से प्लान रखें कि बच्चों की जो है ना क्या क्या इंटरेस्ट है। जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि बच्चों का इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को प्लान करें। एंड लास्टली, अपोलोजाइज व्हेन यू मेस अप। मेकिंग मिस्टेक डजंट मीन यू आर अ बैड टीचर। समटाइम्स हम लोग ये फील करते हैं कि बच्चे जो है ना अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है आप उसको मानते नहीं। इट हैपेंस टू एवरीवन, कि आप हर बंदे से मिस्टेक्स होती हैं, और इवन द बेस्ट एंड मोस्ट सीजन जो एजुकेटर हैं वो भी मिस्टेक्स करते हैं। तो डू नॉट फील शाय, डू नॉट फील एम्बैरेस्ड, जस्ट अपोलोजाइज कि आपसे वो गलती हो गया है, बाय मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग, कंप्यूटर एरर, जो भी रीजन है उसको रीजनिंग के साथ जस्टिफाई करें और अपनी मिस्टेक्स को ओन करें। Next one is know your learner. After building relationship, then know your learner. Before getting starting teaching study habit, assess what your student know first. कि आपके स्टूडेंट्स की पहले हैबिट क्या है, यू शुड बी फेमिलियर विद दैट। आप उन्हें स्टडी हैबिट्स टीच करने जा रहे हैं, स्टडी स्किल्स को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। मे बी वहाँ पे जो आपके पास आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पे उनके जो लर्निंग स्टाइल है, उनके जो प्रीवियस स्टडी हैबिट्स है वो वेरी करें। फर्स्ट असेस देयर स्टडी हैबिट्स कि उनकी पहले क्या है। इसके लिए जो आप कह लीजिए ज्यादा फ्रूटफुल और हेल्पफुल मेथड है, आप यू कैन यूज अ चेकलिस्ट। आप जो है ना हर किसी की जो स्टडी हैबिट्स है वो याद नहीं रख सकते। अगर क्लास में 20 स्टूडेंट्स भी हैं, मोस्टली अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें तो हमारे पास 60 तक की भी स्ट्रेंथ होती है। तो ऐसे सिनेरियो में यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द स्टडी हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट कि किसकी कौन सी हैबिट है। तो इसके लिए यू कैन यूज अ चेकलिस्ट कि बच्चे किस जो है ना टाइप की स्टडी हैबिट्स उनकी हैं और किन एरियाज को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इट विल अवेयर स्टूडेंट्स एज वेल कि उनकी अपनी स्टडी हैबिट्स के, क्योंकि वो अपनी स्टडी हैबिट्स के बारे में सोचते नहीं कि वेदर दिस वर्क इफेक्टिवली और नॉट। दे जस्ट फोकस ऑन कि हमने पढ़ना है या फिर अगर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, ठीक है। तो वो इस चीज पे फोकस नहीं करते। उनको रियलाइज करें करवाएं कि उनकी स्टडी हैबिट्स या उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स हैं वो कौन सी हैं, उसको वो यूटिलाइज करके दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। एंड द नेक्स्ट वन इज टीच हाउ टू स्टडी फॉर टेस्ट एंड क्विजेस। टेस्ट और क्विजेस के लिए जो है ना कैसे प्रिपेयर होते हैं। स्पेंड टाइम टीचिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्टडिंग स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, लाइक टेकिंग नोट्स को कैसे लिया जाए, कैसे किन चीजों को नोट किया जाए, जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर किया जाए। क्विजिंग योरसेल्फ, अपना खुद असेसमेंट करें, खुद एग्जाम लें अपने आप को, अपने आप से पूछें कि उनको क्या आता है। मेक फ्लैश कार्ड्स, हैविंग अ पार्टनर विद यू, आपके साथ जो आपका फ्रेंड है, आपका जो पीयर है, क्लास फेलो है, उसको कहे कि वो आपसे उससे रिलेटेड पूछे। रीडूइंग प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी असाइनमेंट जो टास्क है उसको रीडू करें। देयर आर डिफरेंट वेज, different strategies are going to work for different learners according to their abilities, according to their habits. So it is important that all students are exposed to several activities. उनको different types of activities बताएं कि ताकि जो है ना वो अपनी जो इंटरेस्ट एरिया, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको अडॉप्ट कर सके।
practice studying just to learn. Sometimes अगर हम लोग देखें जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं just for exam purpose. दिस इज नॉट फेयर. आप उन्हें स्टडिंग की आदत उनमें डेवलप करें, उन्हें ऐसे टास्क दें कि वो स्टडिंग की तरफ आए. स्टडिंग को उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसका पार्ट बना लें. स्टडिंग जस्ट टू लर्न कैन हेल्प टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड ड्यूरिंग टेस्ट एंड एग्जाम. जो एग्जाम और टेस्ट के दिनों में वो इतना ढेर सारा टाइम लगा के उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, इट विल सेव देयर टाइम. एंड द फिफ्थ वन इज प्रैक्टिस स्टडी स्किल्स विद करंट करिकुलम. समटाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ये फील करते हैं कि अगर आप स्टडी स्किल्स को अगर आप उसको टीच करते हैं कि आप प्रैक्टिस करें तो वो उसको इररिलेवेंट समझते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि वो ये समझते हैं दिस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर करिकुलम. उनका जो आउटलाइन है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें फिट इन नहीं है. ये तो एक एक्स्ट्रा काम हमें दे दिया गया है, हम क्यों इसकी तरफ आए. हम जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, जो टास्क दिया है, जो असाइनमेंट है, जो प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट करते हैं. ये डू नॉट फोकस ऑन देयर स्टडिंग स्किल्स. वो इस हैसल में तो मेक इट अट्रैक्टिव. उसको जो है ना उनके करिकुलम में एडजस्ट, ऐसी एक्टिविटीज दैट इज पार्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट, दैट इज पार्ट ऑफ देयर असाइनमेंट हो, इस तरह उनको स्टडी स्किल्स टीच करें. एंड सिक्स्थ वन इज टीच अबाउट द पावर ऑफ हैबिट्स एंड रूटीन्स. स्टूडेंट्स को उनकी हैबिट्स और जो रूटीन है उसके बारे में टीच करें कि उनकी जो हैबिट्स हैं दैट आर वेरी इफेक्टिव, दैट इज वेरी बेनिफिशियल. Students can benefit greatly from understanding how important our habits are. अगर वो किसी चीज पे spending time discussing and highlighting some current habits which students already have, so that will bring fruitful outcomes. Like आप जो है ना उन्हें एग्जाम्पल दें कि जो आपकी प्रीवियस हैबिट्स हैं, जो कि जनरली आपकी हैबिट्स हैं, वो उनके लिए एक आपके लिए बर्डन नहीं है. दैट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ. इफ दे प्रैक्टिस दीज स्टडी स्किल्स दैट विल बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ. उसमें उनको एग्जांपल दे, जैसे सेइंग प्रेयर, कि वो नमाज पढ़ते हैं, दैट इज देयर हैबिट. उनकी लाइफ का हिस्सा है कि उन्होंने नमाज पढ़नी है. ब्रशिंग देयर टीथ, उनको बर्डन नहीं लगता कि मैंने ब्रश करना है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर हैबिट. इसी तरह अगर आप ये कहें कि रूम को क्लीन रखना है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो इसी तरह जो उनकी स्टडी स्किल्स हैं उनको मेक देम हैबिट और रूटीन, कि अगर उसको वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो उनकी हैबिट बन जाएगी. टीच एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स. These are very essential, like planning, organizing, self-control, attention, flexibility, persistence. जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स हैं उनको टीच किए जाएं. दिस विल हेल्प देम, मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस विल हेल्प देम इन देयर स्टडीज. वो चीज़ों को प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करेंगे. ज़्यादा आप कह लें कि उनकी अटेंशन होगी टुवर्ड्स देयर टास्क. Teach students that they can often improve these skills over time with practice and hard work. उन्हें ये बताएं कि वो अपनी ये skills with passage of time, with practice और hard work इसको improve कर सकते हैं अगर उनके ये skills नहीं है. Teach time management. Teach them how to work smarter than not always working hard. कि वो smarter ways जो है ना वो adopt करें. Understanding how to manage time is a powerful skill. Teach about understanding time by having students estimate how long a task will take. कि वो उसके उनकी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो पहले से एस्टिमेट लगाएं कि कोई भी जो टास्क है, कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी क्विज है, उसके लिए वो एक एस्टिमेट बताएं कि वो कितने टाइम में कर लेंगे. Then have students actually perform that task and check how close their estimate was. और उसको फिर चेक करें कि वो कितना उसके क्लोज है. By practicing
वो जो टारगेट है दैट कैन बी discuss what it means to prioritize. उनके साथ डिस्कस करें, चीजों को प्रायोरिटाइज करें, जो क्रिटिकल आप कह लें कि स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें, अपनी जो फर्स्ट टास्क है उसको कंप्लीट करें. Then teach organization. One of the most important study skill is learning how to be organized. Spend time explicitly teaching learners how to organize material, how to schedule projects, how to do projects, even how to perform their duties. And make organization a habit. Help students add it in their routine. कि वो अपनी डेली रूटीन में ही इतने ऑर्गेनाइज्ड रहें कि उनको स्टडिंग जो है ना वो डिफिकल्ट ना लगे. Then set up a homework folder. One helpful strategy for many learners is setting up a homework folder that goes everywhere with them. एक very आप कह लें effective habit है कि उसमें उनके पास एक फोल्डर हो जिसमें थिंग्स टू डू, ये काम उनके करने वाले हैं, उनको लेबल कर दिया जाए. these tasks are done and these are to do tasks. ठीक है, उसको लेबल करके वो अपने पास रखें ताकि जो है ना वो उसको टाइमली उसको जो है ना उससे बेनिफिट हासिल करें. देन फाइंड स्टडी बडीज. सैम के उनको स्टडी बडीज मीन कि उनका पीयर ग्रुप ऐसा बनाएं, ऐसे आप कह लें कि ग्रुप फाइंड आउट करें, ऐसे क्लासमेट्स देखें जो कि उनकी स्टडीज में सपोर्ट कर सकें. टीच गोल सेटिंग. All students should learn how to create action-oriented plans to reach their individual goals. This is a skill, but it is also a life skill. अगर आप studying skill है कि वो goal-oriented रहे, लेकिन अगर आप वो life में भी अगर इस चीज को जो है ना implement करें, this is also a very effective. Help them to come up with smart goals. Smart means specific, measurable, and attainable, realistic, and timely. These are the smart goals. Specific means knowing what you will do and how. Means that this is very oriented. Second, measurable, having a precise way to measure. कि आप ऐसे जो है ना मेजरमेंट के टूल्स यूज करें कि वो फौरन उनको मेजर किया जा सके, उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखें या आप शॉर्ट टर्म उनके इफेक्ट है. अटेनेबल, ऐसे गोल्स हो दैट कैन बी अटेनेबल, वो उनके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसका जो है ना आप कहने के आउटकम्स देख सके. रियलिस्टिक, जो उनकी लाइफ के लिए प्रोडक्टिव हो. देन टाइम बाउंड, वेरी लिटिल, जो उन्होंने टाइम फिक्स किया है, हैविंग टाइम लाइन फॉर अचीवमेंट कि इस टाइम पीरियड में वो इन टास्क को अचीव कर लेंगे. दैट शुड बी स्मार्ट गोल. देन चंक projects and long term assignments. Long term assignments can be particularly overwhelming for students. Teach students how to break them apart into smaller and more manageable chunks. कि आप जो है ना लाइक टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, कि उनको अगर आप कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट बच्चों को देते हैं उसकी चंक्स में डिवाइड करें कि उनके हर पार्ट की प्लानिंग, हर पार्ट के लिए उनके पास एक टारगेट होना चाहिए कि इस टारगेट पे वो इस एक डेडलाइन मीट, उनको मिनी आप कह लें कि डेडलाइंस दें कि जो प्रोजेक्ट के चंक्स हैं, एक पार्ट जो है ना लाइक टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंट्रोडक्शन मैंने जो है ना इतने टाइम पीरियड में प्रिपेयर करना है. लिटरेचर रिव्यू मैंने इतने टाइम में करना है. मैंने इंस्ट्रूमेंट कोई डेवलप करना है वो इतने टाइम में डेवलप करना है. डाटा कलेक्शन कितने टाइम में करनी है. तो मिनी डेडलाइंस, गिव मिनी डेडलाइंस टू योरसेल्फ कि उनको हेल्प करें कि किस तरीके से जो है ना वो इसका ट्रैक रख सके और कैसे मीट किया जा सके. टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट, बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएं. इट इज क्रिटिकल टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न कोपिंग स्ट्रेटजी टू हेल्प देम टू डील विद देयर फीलिंग्स इन मोर हेल्दी वे.
हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ स्ट्रेस होते हैं, उसकी आप कह लें कि मैनेजमेंट, उनको हेल्दी वेज बताएं कि कैसे उसको जो है ना आप कह लें कि मैनेज किया जा सकता है, वो उनकी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग हाउ टू एक्सरसाइज, हाउ टू रीड जर्नल्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मोर. कि आप जो है ना उसके लिए उनको जो है ना टेक्निक्स बताएं कि वो उनको अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज किया जा सके. इसके लिए द मोस्ट इफेक्टिव इज 4A. Avoid unnecessary stress, alter stressful situation, adapt to the stressors. जो भी स्ट्रेसर्स हैं उनको अपनी सिचुएशन के मुताबिक अडॉप्ट करें, एंड एक्सेप्ट थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज, और उन चीजों को एक्सेप्ट कर ले दैट कैन नॉट बी चेंज, उस चीज की वो टेंशन ना ले. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन, हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप अ स्टडी स्पेस. Every student should have a designated study space at home and at university, at the campus, to help them to accomplish their tasks and assignments. Like अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, हमारे पास लैब मौजूद हैं जहाँ पे they can accomplish their task. Or at home environment, they also have some specified space. While these study spaces might look different to every learner, having this area can help keep students organized and consistent. कि वो स्टूडेंट्स को जो है ना ऑर्गेनाइज और कंसिस्टेंट रखते हैं, उनकी चीजें स्कैटर्ड नहीं होती, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और वहां पे आप कह लीजिए जो डिस्ट्रक्शन फ्री इन्वायरमेंट होती है. एंड नेक्स्ट वन इज हैविंग अ डेली चेक इन एंड चेक आउट. डेली 5 to 10 minutes, 5 to 10 minutes कि आप जो है ना चेक इन और चेक आउट बनाएं, बजाय ये कि आप अपने माइंड में उन चीजों को जो है ओवरवेल्म करते रहें कि चीजें जो है ना वो आपके कंट्रोल में ना हो. तो डेली चेक इन एंड चेक आउट कर लें कि कौन से टास्क आपके कंप्लीट हो गए हैं और कौन से कंप्लीट होने हैं, और चीजें जब चेक आउट होना शुरू हो जाएंगी तो आपका ग्रेजुअली बर्डन जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज the goal is sorry, next is practice taking brain breaks. All the students need mental breaks for time to time. ये टाइमली जब भी वो स्टडी कर रहे हों उनको माइंड ब्रेक चाहिए. हर चीज जो है ना वो उनकी अगर माइंड में रहेगी तो इट विल कॉज स्ट्रेस. उनको मेंटली ब्रेक की जरूरत है, उनको मेंटली रिलैक्स होने की जरूरत होती है. तो इसके लिए एक तो यह है कि ड्यूरिंग स्टडीज ब्रेक लिया जाए, and secondly practice different type of pen breaks from exercising to practicing mindfulness. ठीक है कि जैसे कि हमने माइंडफुलनेस की पहले भी बात की है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो चीजें होती हैं, हम 4A's को अडॉप्ट करें, अपने फोकस को इंक्रीज करें, रिलैक्स रखें. इसी तरह ब्रेन ब्रेक्स के लिए अगर हम नोट टेकिंग की भी चीजें आप अडॉप्ट कर लें कि हम बजाय हर चीज अपने दिमाग में या अपने माइंड पे सवार रखें, तो उसको जो है ना स्टूडेंट को एजुकेट करें कि वो उसको लिख लें कि दिस थिंग वी हैव टू डू, बजाय कि वो अपने दिमाग में बार बार उस चीज को रिमाइंड, उनके दिमाग में हर वक्त चीजें चलती रहें कि ये हमने करना है. नेक्स्ट, एंगेज इन क्लास डिस्कशन. पार्ट ऑफ लर्निंग इज हाउ टू स्टडी वेल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन चैलेंजेस कम अप. Encourage students to talk through issues and brainstorming solution together. कि क्लासरूम डिस्कशन जो है वो करें और स्टूडेंट्स को जो है ना इंकरेज करें कि वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेके आए. आप ये देखिए कि आपके वन माइंड इज बेटर देन टू माइंड्स आर बेटर देन वन, क्योंकि सबके माइंड से कुछ ना कुछ आप कह लें कि सॉल्यूशन आ रहे होते हैं, और उसको आप जो है ना एक एक्टिविटी की फॉर्म में डिस्कशन जनरेट करें. These are some tips which being a teacher we can follow, we can implement in our classroom settings, and we can get maximum benefit. This is all about my presentation. If you have any queries and you have any question, any feedback, you can give. The house is now open
for question and answer session. Please, if you have questions, you can raise your questions. जी अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो जी जी मैडम जी आवाज आ रही है मैडम आपको जी आ रही है मैडम आपकी आवाज आ जी रही है। माशाल्लाह मैडम आपने बहुत अच्छा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आज आपने प्रेजेंटेशन दी बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स हमें भी पता चली कि जो हम सोचते हैं कि डिफरेंट किस्म की जो स्टडी हैबिट्स होती हैं हम बाज़ात इसको ना वो नहीं ले रहे होते इतना सीरियस नहीं ले रहे होते लेकिन आपने बड़ा अच्छा डिफाइन किया कि कौन सी चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं और किन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए थैंक यू वेरी मच बहुत मज़ा आया आपका लेक्चर सुन के थैंक यू वेरी मच वेलकम जी Any other comment or suggestion, please, from the house? If there are no more questions, then I would like to thank Dr. Tasina Hassan for delivering a very informative talk. I think it was a very interesting lecture. And I would also like to thank all the participants for their participation. And our next lecture would be on next Thursday at the same time, that is 2 p.m. with a new presenter. Thank you once again. थैंक यू